So we were a 100 crore brand when we went offline. It was like the first time for me also to run such a big team. Where that evolution meets the consumer. We'll always start with the consumer first approach. We don't think pricing is as big a driving factor as it is made it to be. Many important decisions inside a business do not announce themselves. Most of what you see about the companies you admire, the magazine covers, the funding announcements, the Twitter threads, that's the finished product. That's the version of the story that makes for great retrospectives. With before it was obvious, we're trying to capture something quieter. The choices that actually shape a company. The ones that happen in boardrooms and WhatsApp groups and founder-only conversations at 12 in the night. The calls that looked risky at the time and only made sense later. Or maybe they didn't. Today's episode is about Pilgrim. You probably know the brand. It's an ingredient-led beauty brand that has quietly become one of the most watched stories in the Indian consumer space. Please join me in welcoming the founders of Pilgrim, Mr. Anurag Kedia and Mr. Gagandeep Makkar. Thank you so much for joining us and being a part of the conversation today. Thank you, Khadija. Thank you, Khadija. It's a pleasure. Okay, so I want to start the conversation by meeting who Pilgrim is today. Okay, the company that the two of you are actually running right now. I'm not going to make you repeat the original story. आप लोगों ने वो बहुत बार बहुत interviews में, articles में, podcasts में, you guys have talked about it very beautifully. So if we were just focusing on Pilgrim as on today, and the question therefore is the same question to both of you. When you describe Pilgrim, it could be to a relative at a wedding, it could be to a new hire who's just joined Pilgrim. What is the sentence that you actually use, right? How what captures Pilgrim for you guys? So Pilgrim is a traveler going from place to place, country to country, searching for the best beauty secrets from around the world and bringing them to India, to Indian audiences at India-friendly prices. I think that's what... Yeah, I think to make it even simpler, आपने बोला कि relatives को क्या बताते हो. So I think I always tell them कि यार आपको best चाहिए ना, just leave everything to us. We'll figure out, and we always start from the consumer, like what are their requirements, and then work back, and then we find the best ingredients, whether it's a scientific ingredient, whether it's a natural ingredient, and then we make sure that the product delivers the result from which we started. So I think... Now, what is really interesting about Pilgrim is that it has grown alongside a consumer who has become very informed, right? I think people are reading labels a lot more carefully. They are recognizing ingredients more easily. They become so, familiar with ingredients. So they're, I would say, very comfortable with the language of the category, right? So what happens in such an instance is that what once could have been distinctive has the risk of becoming familiar very quickly, right? So, and Pilgrim is, I think, one of those brands. Early recall जब आप लोगों ने build किया था, वो ingredients के basis पे build किया था, right? There was the Jeju volcanic ash, there was the Korean tea tree. So I want to talk about the moment that you guys realized that maybe ingredients alone would not be enough, right? So I don't know if it was a moment, Khatija, but I think it's been a journey. So हम अभी भी ingredients की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो ingredients हैं वो easily copy करना मुश्किल है. So आज भी एंड लोगों ने कोशिश किया है एंड दे फेल्ड. सो आज भी फ्रेंच रेड वाइन लेके या स्पेनिश कॉलिन लेके या ऑस्ट्रेलियन टी ट्री को लेके कम ही ब्रांड्स हैं जो कि बात कर रहे हैं, या वॉल्केनिक लावा ऐश की बात कम ही लोग कर रहे हैं. सो इंग्रेडिएंट्स कॉपी हो सकते हैं, लोगों ने कोशिश किया एंड दे फेल्ड बिकॉज दे वेंट ओनली आफ्टर द इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन. सो पूरा फॉर्मूला को साथ में काम करना पड़ेगा. सो जैसे गगन भी पहले बोल रहे थे कि चाहे वो साइंस हो चाहे नेचुरल इंग्रेडिएंट हो, हमारे मोस्ट फार्मूलाज में इट्स अ ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स. ओके. सो यदि हम अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से पतवा लेके आ रहे हैं तो उसको केराटिन के साथ ब्लेंड कर रहे हैं. यदि फ्रेंच रेड वाइन है विच इज़ एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, उसको हम रेटिनॉल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं. तो ये जो ब्लेंड्स हैं ये बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स को रिजल्ट समझ आते हैं और द लैक ऑफ इट. सो फाइनल रियलिटी कंज्यूमर के लिए यही है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम किया कि नहीं, एंड दैट्स द फाइनल ट्रूथ. इसके लिए हम लोग काफ़ी सारा काम करते हैं. इनफैक्ट गगन हैज़ बिन वर्किंग वेरी क्लोजली विद आवर CMI टीम कि पहले तो कंज्यूमर इंसाइट्स क्या हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो हर महीने सैकड़ों घंटे हमारी पूरी टीम, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स वी स्पेंड विद कंज्यूमर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो क्या बोल रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स से क्या प्रॉब्लम है, हमारे प्रोडक्ट्स उन्हें कितने पसंद आ रहे हैं. We scan trends across various marketplaces in India
एंड ग्लोबली बहुत सारी R&D और रिसर्च कई बार कोरिया से निकलती है, कई बार वेस्टर्न मार्केट से निकलती है। कैटेगरी मैनेजर्स के पास बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं, तो जितने मार्केट प्लेसेस हैं उनके कैटेगरी मैनेजर्स के पास इंसाइट होते हैं कि यार ये कंज्यूमर्स की अभी भी प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व है, यहाँ पे एक वाइट स्पेस हो सकता है। तो ये सब जब कंबाइन करके हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इनफैक्ट प्रोडक्ट लॉन्च के पहले भी गगन ने एक इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम है सीक्रेट सर्कल, जहाँ पे 200-300 कंज्यूमर्स की एक कम्युनिटी है जिनको हम सैम्पल्स भेजते हैं, जिसपे कि कोई बेंचमार्क सैंपल होता है जो कि शायद अभी ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर है कि हमारा प्रोडक्ट उससे बेटर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, एंड वो वाइट लेबल होके जाता है। तो किसी को पता नहीं कि एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, वो AB जाता है। ब्लाइंड टेस्ट, हाँ, ब्लाइंड टेस्ट चाहिए। फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं ओनली व्हेन द कंज्यूमर्स हैव सेड कि हमारा प्रोडक्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं उससे सुपीरियर है। Okay, so then it is not कि ingredients से you moved away, but I think it's become more कि individual ingredients नहीं, अब combination of ingredients है और फिर वो ingredients at the end of the day benefit का deliver कर रहे हैं। I think and more than all of it, I think it's the way the product itself is experienced by the consumer that really tells you whether it's working or it's not working, right? I still remember when we during our pitch to Fireside, we had this discussion कि यार so these are your first set of ingredients, then what are the next set of ingredients. That time also we had a discussion कि यार we'll always start with the consumer first approach, and obviously Fireside has always pushed us even further कि यार और बताओ. So all these CMI work also, it's we have always taken motivation from the Fireside team कि कैसे we start from the consumer and then come to the whiteboard and then start building the product. So it's far complex than just a combination of ingredients. How do we blend them? Blend is a very simple, simplistic word. How do we formulate it, and what are the different parameters which we have to take care of while so that the final what Anurag was saying कि customer को दिखता है यार मेरा problem solve होना चाहिए. Okay, now once the product starts evolving, the next question of course is where that evolution meets the consumer, because how a brand is built is also shaped by where it chooses to be discovered, right? I think in Pilgrim's cases, some of those choices were quite different from where the category was moving at that point in time. So let's talk about channels. When a lot of the other brands were putting their weight, behind the Amazons and the Flipkarts of the world, you guys chose to go really deep on Nykaa. So what were you seeing at that time that told you that this was the platform that actually mattered for Pilgrim? Sure. So I think as compared to now, at present, I would say that most of the platforms, the consumer profiles are almost similar, if not same. At that time, Nykaa obviously had more evolved customers, and as we were new to the market, we had more complex formulations and which had scientific ingredients also and natural ingredients also, which were also nuanced, as Anurag was saying कि यार वो इन्होंने जो use किया था Indian ingredients, बोलना भी थोड़ा difficult है. जामफल, जायफल, इंडिया में जायफल बोलते हैं, वहाँ जायफल है तो कोरिया में युगडुगु. Korean yugdugu. So all these ingredients, we wanted the consumer who can appreciate the complex formulation. So I think that's why we went to Nykaa. But was there something on the Nykaa platform that was making it easy for consumers to understand the ingredients? I think Nykaa में एक जो चीज़ थी ना कि उनका कोरियन ब्यूटी का ऑलरेडी सेक्शन था. अच्छा, okay. ये बाकी प्लेटफॉर्म्स ने बाद में इंट्रोड्यूस किया सबने, बिकॉज के ब्यूटी स्टार्टेड बिकमिंग बिग, एंड हमारा जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो कोरियन ब्यूटी इंस्पायर्ड थे, कोरियन ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स के साथ थे. Okay. एंड नाइका ऑलरेडी हैड अ कंज्यूमर बेस फॉर कोरियन ब्यूटी एंड दे वर ऑलरेडी रिटेलिंग कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स. Got it. Okay. तो वहाँ पे एक कोहॉर्ट, एक कम्युनिटी ऑलरेडी, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक था. Yeah. So we always believe कि जहाँ पे हमारा relevant customer है, for let's say for any product or any category, we start from there, so that we get the first hand experience कि यार अगर आप evolved audience को if you are able to make them happy, then you go even deeper. Now, for most brands, moving from online to offline is never a simple question कि एक और channel enter करना है, right? There are questions that you have to answer about how do you enter, where do you enter, and what part of the business is actually ready, for that move. And I think in Pilgrim's case, it seems to have been thought through very deliberately, right? You chose to go offline at a stage when many around you felt that the business maybe should wait a little longer, maybe it's not ready. But then you chose to go offline. You did it very deliberately. You didn't spread wide. You went deep through the beauty advisor route. You were
very selective in the kind of geographies that you wanted to pick for the offline market. So what was it that you were seeing that told you that this is the right time and the right way to go offline? आई थिंक ये हमारा काफ़ी डिबेट हुआ था फायरसाइड टीम के साथ कि पहले तो व्हाट इज़ द राइट टाइम. Yeah. So I'll tell you the number in terms of sales. So we were a 100 crore brand when we went offline. But the decision was not because we were 100 crores. हम बहुत रेजिस्टेंस के साथ हम ब्रांड ट्रैक्स हमने करने चालू किए थे. एंड गगन और मैं हमेशा बात करते थे यार ये पैसा फायर साइड खर्चा करवा रहा है, ये हमें तो समझ नहीं आ रहा है, हमें तो पता है कि हम कुछ भी नहीं है अभी ये ब्रांड ट्रैक में क्या रिजल्ट आएगा. बट विनय वाज वेरी इंसिस्टेंट कि यार ये करो, इसका यूटिलिटी कभी तो तुम्हें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि ब्रांड ट्रैक का क्या यूटिलिटी है. एंड बिकॉज वी हैड नॉट एक्सपीरियंस ब्रांड ट्रैक्स अर्लियर, हमें लगता था यार बहुत पैसे हर क्वार्टर में हर 6 महीने में जा रहे हैं. Sure. एंड कुछ नंबर निकल के आ रहा है, अभी उससे क्या करें. बट वन ऑफ द मेट्रिक्स वी हैड सेट असाइड अगेन इन कंसल्टेशन विद फायरसाइड वाज कि when the awareness scores of the brand are at a certain level, and that number I think if I recall correctly was 35 or 40. This top of mind awareness? Top of mind awareness is above 35 and 40, then in the online buying audience. तब आप ऑफलाइन जा सकते हो, बिकॉज ऑफलाइन में तो उसका स्कोर हाफ या 1/3 ही होने वाला है. Sure. बट एटलीस्ट ऑनलाइन बाइंग ऑडियंस में आपका 35-40 का 35-40 का स्कोर आ गया है टॉप ऑफ माइंड. तो ये जब हमारा ब्रांड ट्रैक में दिखने लग गया, देन वी सेड नाउ पोटेंशियली यू कैन गो. Okay. बट मॉडर्न ट्रेड जाओ, जनरल ट्रेड जाओ, अनअसिस्टेड जाओ, ब्यूटी एडवाइजर जाओ. अगेन वी बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एंटायर फायरसाइड टीम विच हैड ऑल कम फ्रॉम एन एफएमसीजी एक्सपीरियंस. उन्होंने बोला यार तुम शेल्फ पे माल रख दोगे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता नहीं है, टेस्ट करते हैं. एंड लेट्स पिक अप 1 or 2 ज्योग्राफीज, 1 or 2 सिटीज, वहाँ पे टेस्ट करते हैं. नहीं भी चला, डैमेज इज लोअर. Sure. वो टेस्ट करने के लिए भी वी शुड ओनली गो द असिस्टेड रूट, बिकॉज यदि ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी हम नहीं बेच पा रहे हैं Then that tells you कि तो उसके बाद तो something अनअसिस्टेड में तो कोई fundamentally- चांस ही नहीं है. Sure. राइट. सो देन वी से ठीक है, ब्रांड असिस्टेड के साथ ब्यूटी एडवाइजर चैनल इज अ स्ट्रॉन्ग चैनल इन ब्यूटी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. गॉड वाज काइंड, थैंकफुली कंज्यूमर्स वर रेडी फॉर पिलग्रिम टू बी अवेलेबल इन ऑफलाइन एंड अर्ली ट्रैक्शन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वी से ठीक है ये ब्यूटी एडवाइजर चैनल है, हमने 100 काउंटर्स को सेटअप किए थे, ये चल रहा है. ये 2 रीजन्स में हम और एक्सपैंड करते हैं. तो हमने केवल नॉर्थ और वेस्ट में दिल्ली बॉम्बे से लॉन्च किया था, वहाँ पे हम और डीपर जाना चालू किए, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ ऐड की. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर आई थिंक 6 or 8 months वी डिसाइडेड टू ऐड साउथ. उसके करीब 1 साल के बाद हमने ईस्ट लॉन्च किया, Okay. ओनली ब्यूटी एडवाइजर लेड, बिकॉज दैट वाज द ओनली प्रूफ पॉइंट वी हैड. That you had, sure. उसके ये ब्यूटी एडवाइजर चैनल चालू होने के कुछ 1.5 या 2 साल के बाद हमने अगेन बॉम्बे से विच वाज Your core एक first थोड़ा सा market. हमारा ये भी मानना है कि हेड ऑफिस इफेक्ट हमेशा होता है. वो सब ब्रांड्स के लिए है है, ना, that logic जहाँ पे is हेड there. ऑफिस होता है मैक्सिमम सारा अटेंशन experiment वहीं पर होता है, तो सारे then yes, एक्सपेरिमेंट्स of एंड course. वहाँ पे ब्रांड सारे ही ब्रांड्स के लिए करीब जहाँ हेड ऑफिस होता है दैट ज्योग्राफी बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट. Strongest, of course. तो हमारे लिए बॉम्बे हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट है, इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द नंबर 1 सिटी. तो फिर हमने बोला यहाँ पे जैसे हमने ब्यूटी एडवाइजर चैनल टेस्ट किया था, लेट अस टेस्ट द नॉन असिस्टेड चैनल, जो हम फैंसी स्टोर्स की बात कर रहे थे. Yeah. तो फिर हम फैंसी स्टोर्स में हमने कुछ प्लेसमेंट्स किए. अगेन कंज्यूमर्स वर काइंड टू अस एंड वहाँ से भी ऑफटेक्स आने लग गए, वहाँ से हमने बिल्ड आउट करना चालू God, is किया. very I'll just add that खतीजा, तो व्हाट हैज आल्सो हेल्प्ड अस इज जैसे फेस सीरम्स हैं. फेस सीरम्स नॉर्मली 500, 600, 700 रुपए में बिकते हैं इंडिया में, एंड 30 ml इज द स्टैंडर्ड पैक साइज. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कैन वी डेमोक्रेटाइज दिस इवन फर्दर, एंड हमने 10 ml पैक्स चालू किए, एंड दैट हैज एक्सप्लोडेड फॉर अस, बिकॉज बहुत बार कंज्यूमर्स पहली बार सीरम ट्राई कर रहे हैं sure. तो वो 600-700 रुपए का इन्वेस्टमेंट बड़ा लगता है. Of course. या लगता है ये मेरे स्किन को सूट करेगा कि नहीं करेगा. कैन आई गेट अ ट्रायल पैक? सो द 10 ml has become a trial pack. And in that trial pack, you're able to showcase results so that the repeat purchase happens? सो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आपके एक फुल यूजेज के बाद आएंगे वो नहीं देखेगा, बट देयर इज एनफ Initial signs तो आ ही जाता है. इतना पता चल जाता है कि एक तो यार प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है एंड कुछ डिफरेंस मुझे पता चल रहा है. Now, just on the offline piece, when you did this experiment, right, what became clear to you that this store is working for Pilgrim? Were there certain metrics that you were tracking that gave you confidence कि this is working? तो इसमें 2-3 डेटा पॉइंट्स है. एक तो जो सेल्स टीम हमारी थी, दे वर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस इन द मार्केट. 5 साल 10 साल 20 साल से लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो उनका काफ़ी रिलेशनशिप्स थे और डेटा था उनके पास कि ये स्टोर्स में पोटेंशियल है. फिर जब आप चैनल पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप काम करते हैं, उनके पास भी काफ़ी मार्केट इंटेलिजेंस होती है कहाँ पे पोटेंशियल है. थर्ड, फिर आप कुछ कंपटीशन बेंचमार्किंग करते हो, आप स्टोर्स में जाते हो, पता करते हो कि यार टोटल सेल उस स्टोर की कितनी है, And what is बाकी your ब्रांड्स की share? क्या सेल्स आ रही है, एंड डिजिटल ब्रांड्स की क्या सेल्स आ रही है. Sure. बिकॉज बाकी कुछ डिजिटल ब्रांड्स थे जो अलग अलग स्टेजेस पे थे ऑफलाइन जाने के,
तो हो सकता है कि किसी MNC या लेगेसी ब्रांड की बहुत अच्छी सेल आ रही हो, बट वहाँ पे डिजिटल ब्रांड्स की सेल आ सकती है कि नहीं, ये कुछ डेटा पॉइंट्स लेके वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर थीसिस. एंड इसके बाद एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड लॉन्चिंग, ऑब्वियसली लॉट मोर लर्निंग्स केम इन कि कहाँ पे पोटेंशियल है. देयर इज ऑल्सो सम डेटा यू गेट फ्रॉम द D2C वेबसाइट कि कौन से पिन कोड्स में consumers are responding a lot more to the brand. Sure. So you overlay all of these data points to kind of figure out. I think listening to what you guys have spoken so far, I think what's becoming clear is that many of the decisions, that probably look very obvious today, were not that obvious when you were actually making those decisions, right? Because I think brands often work off signals which are more internal, which are very visible to you, but they may not be convincing enough for the world outside, right? When Pilgrim was growing, I think there were some questions, or what do you remember about the doubts that people still had in their minds? Like, what was it that you were having to defend, despite the fact that there were numbers that were giving you confidence that, things are working? So in fact, ये तो मैं Fireside के साथ ही बताता हूँ कि हमारा जब फर्स्ट फंडिंग हो रहा था विद Fireside एंड Fireside, सो थैंकफुली द फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स वाज ग्रेट, फीडबैक ऑन द टीम वाज गुड, बट अ लॉट ऑफ पीपल इन Fireside सेड यार ये ब्रांड समझ नहीं आ रहा है, ये या तो बोलो के ब्यूटी कर रहे हैं, या बोलो आयुर्वेदा कर रहे हैं, या बोलो साइंस कर रहे हैं, ये ब्रांड क्या है जो बोल रहा है मैं दुनिया भर से चीज़ें खोज के ला के एक ही ब्रांड में दे रहा हूँ, ऐसा तो कोई ब्रांड ग्लोबली है नहीं, एंड ये समझ नहीं आ रहा है. तो ये काफ़ी डिबेट Fireside में हुआ था, जो हमें बाद में पता चला. थैंकफुली द चेक केम इन, उसके बाद बताया कि नहीं ये डाउट है. एंड व्हेन दिस हैपेंड, उसके 1-1.5 साल के बाद जब हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हो रहा था अगेन विद Fireside, ये डाउट्स वापस आए एंड वी हैड स्केल्ड क्वाइट वेल. तो आई थिंक व्हाट हेल्प वाज द कंज्यूमर लव व्हिच वाज वेरी विजिबल, एंड द कंज्यूमर फीडबैक एंड द कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांड. Sure. So as much as we are consumer first, and this has also flown partly from Fireside, that Fireside is equally consumer first, तो उन्होंने भी यही बोला यार हमें नहीं समझ आ रहा, कंज्यूमर्स को कॉल करते हैं. एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग पिलग्रिम कंज्यूमर्स. वो हमसे रैंडम डेटा लेते थे कि 1 से 30 तारीख का सारा डेटा दे दो एंड वी विल मेक रैंडम कॉल्स, सो दैट यू डोंट प्लग इन कंज्यूमर जो ऑलरेडी अच्छा चीज बोल रहे हैं. तो वो सब वो Fireside काफी मस्त करता था. While we were anyway speaking to consumers, जब Fireside के पास ये राउंड्स हो रहे थे, Fireside team also started making calls, and that feedback somewhere closed the loop, saying कि नहीं यार ये हमें समझ आ रहा है, चाहिए कंज्यूमर्स को समझ आ रहा है ये. Okay, got it. And that's how you were able to convince. I think this question of conviction, right, also shows up in the way the brand is talking to the consumer, right, or the brand is communicating to the consumer. Okay, now especially when it comes to beauty, consumers are constantly exposed to new claims, new ingredients, new promises, which what happens because of this extreme exposure is that the question is no longer about visibility of these claims and promises, right? It becomes how do you persuade this consumer who has seen many versions of the same story, right? What is it that you have learned about building trust in this category, or building a brand's credibility in a category where a lot of consumers are very familiar with the category, and therefore the task of building that trust and credibility becomes a lot more harder. So in your experience, what is it that you guys have done that has led to that trust being built? So I think as in any relationship, trust builds with time. So there are no shortcuts. I mean, obviously there are so many claims, as you said, all the brands are making, but when a consumer is buying the product, when we have tracked the journey, they go to Amazon or different marketplaces, they see the reviews, they go to YouTube, and let's say if they follow any influencer, they go to their videos and see, and especially the word of mouth, if any of the family members is saying ki this product has worked for me. So there are a lot of things. I don't think that a brand can directly influence all those things. Those are all the results of how your product is working for them. So there are no shortcuts. We have to work really hard to make sure that obviously first at each touch point we are listening to the consumer, because as we said that it's a gold mine. I mean whether it's on our website when we do the surveys, whether it's our NPS when we send them a message, if somebody is taking out their 2 minutes to fill up something, we should track that data and learn something from that. So I think all those learnings help us to improve our services, our product further. That's what eventually over time builds trust and credibility. Even the retention metrics, if you see, as the brand grows bigger, the retention metrics also start improving themselves, because
again the word of mouth and the wheel starts flowing. Was there something that you initially assumed ki matters a great deal to the consumer? And I'm talking more from a brand communication point of view. But then you realize कि maybe this is not influencing choice. जितना आपको लगा था कि इसका impact आएगा, maybe this is not as impactful. Was there something from a brand comms? Because I've heard that you guys have done a lot of experimentation with content. Like the amount of content that you have created and tested. So is there some learning कि आपको लगा कि ये तो पक्का ही काम करेगा and you realize कि maybe this is not as influential? Yes, I think एक जो जनरल नोशन होता है कि प्राइसिंग इज वन बिग ड्राइविंग फैक्टर. वी डोंट थिंक प्राइसिंग इज एज बिग अ ड्राइविंग फैक्टर एज इट इज मेड इट टू बी. कंज्यूमर्स वांट वैल्यू फॉर व्हाट दे आर स्पेंडिंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही पैसा देने तैयार हूँ. लोग फ्लेक्सिबल हैं कि मुझे जितनी वैल्यू मिल रही है मैं उतना पैसा देने तैयार हूँ. Sure. I think, especially when it comes to beauty, I think it's equally important to be transparent about what this product does not do, or who it's not meant for. Yeah. I think being very upfront and transparent also in a way actually builds trust on the brand itself, right? Okay, now moving to this journey that you guys have been in, it's a fairly big brand today, right, Pilgrim? So I think what happens as the brand scales, I think one of the shifts that happens over time is the founder's role also evolves, right? In the early years when you guys had launched Pilgrim, a lot would have been solved through speed, through you guys directly getting involved in fixing the issue and the problem, right? But over time the company has become a lot more layered. You've got a much larger team, a lot more moving parts, there's a lot more dependency, and I think decisions keep happening at once, right? So I think it becomes much more harder for the founder to give attention to every single thing in the organization. So there comes a time wherein the systems have to start doing a lot of the work, right? What is one part of building Pilgrim today that demands a very different kind of attention from you when you compare it to a few years ago? I think it is internal communication. तो खासकर शुरू के आई थिंक 2-3 साल तक वी वर अ वेरी लीन टीम. फॉर द फर्स्ट 1.5 years वी वर अ 6-member टीम, देन वी बिकेम अ 15-member टीम, देन वी बिकेम अ 35-member टीम. ये शुरू के 3-4 साल की जर्नी में बता रहा हूँ. उस समय पे कभी ये नहीं हुआ कि यार ये कुछ लोगों को पता नहीं है, सबको सब पता होता था. कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी. कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा तो सबको पता नहीं कैसे पता होता था. कोई प्रोडक्ट का अच्छा फीडबैक आया वो भी सबको पता होता था. कहीं कुछ इशू आया वो भी सबको पता होता था. हमने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि यार ये हुआ है. As the team has become larger, I think the need to communicate a lot more with different teams has gone up quite a lot, and that has been one big change. I'm still trying to adopt, because कई बार होता है कि यार ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं, लेकिन उस टीम को पता था, इस टीम को पता ही नहीं था कि ये हो गया है या ये हो रहा है. And that communication, I think consistent communication, creating mechanisms, forums, all of that to ensure that communication flow is happening smoothly from one part of the organization to the other part of the organization. Today, what is taking a lot more thought than effort? So, if you were to compare, to your previous initial years, what is it that today requires a lot more thought than effort? I think in the previous years, there was not actually much time for thought. So, there was no option. Like सब कुछ, as Anurag was saying, कि वही 35 लोग हैं starting में. तो I remember like I used to sit with the designer, ये ऐसे करो वैसे करो. Photoshop, I didn't know Photoshop, so that time सीख ही लिया था. But now I think again, like just from the experience, because it was like the first time for me also to run such a big team, and now most of the thought goes into how to groom the leaders, because it's very difficult. Earlier you have visibility in everything. क्या डिज़ाइन में ये हो रहा है, प्रोडक्ट में ये लॉन्च हो रहा है, मार्केटिंग इज गोइंग लाइक दिस, हाउ आर द सेल नंबर्स, एवरीथिंग. बट देन यू हैव टू ट्रस्ट द स्पेशलिस्ट यू गेट ऑन योर टीम्स, बिकॉज इन द बिगनिंग एवरीवन इज अ जर्नलिस्ट. कि ठीक है यार, तुम आओ, तुम एड्स देख लो, तुम आओ यार, तुम डिज़ाइन का पूरा हैंडल कर लो, तुम CX देख लो. बट आई थिंक देन एज द टीम ग्रोज ऑन, you have people who knows far more than you. Sure. And on top of that, they have like very good intention to also like scale up quickly and learn even further. और आपको तो उतना आता नहीं है, so you have to make sure that they are confident कि ठीक है, whatever support I need, this company will give me. They will give me the environment to like for my journey also, for my personal journey also, मेरा कैसा रहेगा सीखने का. So I think that is the main thought, to give everyone that beautiful environment, and we are very lucky that we have such a beautiful team, and whatever culture we had thought,
अभी तक तो वैसे ही चल रहा है एंड लाइक द टीम जो भी नहीं आती है देयर टीम मेंबर्स आल्सो देन स्टार्ट बिहेविंग सेम सो आई थिंक वो कल्चर पूरा स्प्रेड करने में पूरा इंश्योर करने में उसमें सबसे ज़्यादा थॉट जाता है बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दैट. That's amazing. And also, I think one of the most important things as the company scales and the teams becoming larger, how do you, retain the core of who Pilgrim is Yeah. at, 100, 200 people, I think it becomes very, very important and critical. Yeah. Super. Okay, one thing that really stands out through this conversation is that many of Pilgrim's important moves seems to have come at a time when the business recognized that it could not keep operating in the same way as it was doing before. Whether आप products बोलो या communication बोलो या channels बोलो, right? So how do you recognize that moment where you realize कि the current way of building the business is no longer enough and now the business needs to actually change gears? Anurag? Yeah, I think a lot of the credit goes to Fireside and the engagement we have had. So 2-3 things I will say what worked for us in this partnership with Fireside. One is, and Vinay always used to say हमारी board meeting next month कम है. मुझे तो समझ नहीं है हमारी बोर्ड मीटिंग हो रही है ना. आई यूज्ड टू टेल विनय हमारी बोर्ड मीटिंग नहीं है वो तो हम बात कर रहे हैं बस. एंड ही स्टिल यूज्ड टू से हम ना 20 तारीख को हर मंथ बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं. मैंने बोर्ड मीटिंग क्या है? हम तो कुछ ना डेक बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं. आते हैं बैठते हैं आपसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. आप कुछ बताते हो हम कुछ बताते हैं एंड वी कम अप टू अ फ्यू डिसीजंस. आई थिंक दे वर वेरी हेल्पफुल because Fireside had already seen many journeys of consumer brands growing and what are the challenges which brands will have. Right, so at what point of time do you start hiring senior people in the team? Because it's not an easy decision on multiple counts. One, you have to let go of a lot of control. Yeah. In the early days, it can be very scary. At scale, it is needed, but जब वो transition चल रहा है तो it gets scary. There is a certain cost attached to senior people. वो भी लगता है कि यार बैंक में इतने पैसे हैं, salaries में इतने चले जाएंगे, आगे कैसे चलेगा? या ऑफलाइन जाना है नहीं जाना है, मार्केट एक्सपेंशन कब करना है, प्रोडक्ट लॉन्चेस कितने करने हैं कितने नहीं करने. सो Fireside almost had playbooks written down for each of these. In fact, I still recall there, which is now a public document, there is a D2C playbook which Fireside had published. Before we got funded, first call with Fireside with Vinay, this is 1 year before the funding. I said, आपकी कोई D2C playbook है जो आप केवल अपने पोर्टफोलियो को देते हो, हमें चाहिए. He hesitated for a moment. He said, कैसे पता है? I didn't want to tell him then, but Gynoveda, had already got funded and Vishal had told me. तो मैंने विशाल से मांगी थी. Vishal was a friend. He said, यार मैं नहीं दे सकता, वो Fireside proprietary है, but तुम्हारी कभी Fireside से बात करो तो उनसे मांग लो. तो मैंने विनय को बोला आप दे दो. तो he said, यार अब मांग लिया तो मैं मना भी कैसे करूँ? तुम्हें पता है. तो मैंने बोला आप हिचकिचा क्यों रहे? बोले यार थोड़ा वैल्यू ऐड हमारा भी दिखता है वहाँ से, मतलब फाउंडर्स को जब हम करते हैं कि ऐसी हमारे पास बहुत सारा प्रोप्राइटरी प्लेबुक्स हैं जो हम यूज करके हेल्प कर पाते हैं फाउंडर्स को. सॉफ्ट कमिटमेंट तभी ले लिया था कि भाई अब तो मेरे से पैसा कि ऐसे होने वाला है, अब रेडी हो जाओ. But he was nice enough to kind of send the playbook and then it had links embedded for 20 other documents. तो मैंने सब पे जाके रिक्वेस्ट एक्सेस किया, वो सारे 20 डॉक्यूमेंट देन ही सेंड. ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिली. वी हैव स्पोकन टू एवरी सिंगल टीम मेंबर. ESG के लिए देयर इज स्टिल अ टीम. कंप्लायंस के लिए देयर अमित हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल कि यार कंप्लायंस के बारे में क्या कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट क्या कर रहे हो. सो व्हेन वी माइट नॉट हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस बिकॉज हम तो धंधे में लगे हुए हैं कि ये GST फाइलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. Fireside का एक मेल आ जाएगा, यार तुम्हारे सारे GST के भेजो, कोई तो बैठ के चेक करेगा. इट इज़ ईजी टू मिस इन एन अर्ली जर्नी. फिर वो ऑडिट के टाइम में पता चल रहा है, तब तक लेट हो चुका है कुछ करेक्शन करने के लिए. Awesome. I think what this conversation, really shows us is that many important decisions inside a business do not announce themselves, dramatically. They just ask for judgment at the right time. Thank you very much for being so candid, for being so open, for being so honest and transparent and sharing your thoughts.